Hi, this is Kapil Gunjika. Welcome back to my YouTube channel, Kapil Gunjika Life Vlogs. And I know my subscribers, my viewers are very intelligent. They have read the title. I know that. Yes, this video is educational purpose. The use and the benefits of incentive spirometer. It is also known as spirometer. Basically, I would like to give a disclaimer first that please consult your doctor even before buying or going for an exercise with the incentive spirometer. Even if you are healthy or if you are, I don't, fingers crossed, I don't hope anyone is in a bad health condition or affected with COVID. or affected with COVID. So even if they are, we would a big disclaimer. We would recommend you to consult your doctor, the treating doctor, and according to the treating doctor's instruction, please follow their steps, guidelines. If they tell you, if they ask you, if they advise you to, if they advise you to do the exercise Using the spirometer. using the spirometer according to their instruction, only do it. This is we are And under their supervision and under their guidance. basically yes, and under their supervision. We are just an educational or the importance of educational sort of an educational video and the importance of it, because in this video you are going to see my younger brother who has been who is a COVID survivor, my mom who is a COVID survivor, my dad is a COVID survivor, and my mom and my younger brother, they both were given this exercise. They both came back. That's a good sign. They both came back. They are the survivors, and that's the reason I thought I should give a educational this thing. Let's see you in the video. Like I will come at the end of the video. You would. Hello friends, as you might have seen the introduction, and I would like to reiterate that today we are going to speak on incentive spirometry. Okay. Now you might question that why suddenly a video on incentive spirometry. In lieu of rising cases of COVID and people not having the core vital capacity or core strength of their lungs, even people like who are bodybuilders and everyone, they are also dying of COVID. So we all exercise on the external aspect of our body, however lungs are not worked at all. So this device helps you to improve your lung capacity. Now this is called as incentive spirometer. It is having a tubing. Here there is a filter. There are 3 balls and there are holes over here in each of the cylinders, and there is an air gap over here as well. Now to give you a backdrop of incentive spirometer, this was not known to many of the people, since this is only given when you have a CABG operation done. CABG is basically an artery replacement of the heart. That time they cut your sternum, they open your body, and they do the replacement. So at that time even the lungs get damaged a bit. So basically this is to improve the lungs at that time. They have to do. And if you want to add, she is a doctor. Yeah. And the heart also. Yeah. This basically gives a strain on lungs and heart, but it does improve as well. Now here you can see there are 3 gradings: 600 cc psi, 900 cc psi, and 1200 cc psi. No. Remove hand. Remove your hand. Yeah, correct. 600, 900. Yes. Basically this is like how much pressure your lung is able to apply. Now I'll demonstrate. Basically this is a mouthpiece. You can replace the mouthpiece as well, like if you want to share with your family or something, you can replace the mouthpiece. Okay.
This is my own that I am using. This is the mouthpiece. Pressure is more in my hands. See, the normal protocol too is basically you hold it by your right hand and do this by your left hand. When I was in hospital, I had a IV placed over here. I used to do it just by single hand, like this. Okay. And hold this vertical at your chest level. Or you're above your chest level. As you move this above, the gravity affects more on this. So to pull it upwards, you have to exert more pressure. So hold it at chest level. Means if you're a beginner, if you are doing it at the start, or if you are heavily affected, if you are heavily affected, then basically you have to just hold it at chest level. Your chest level. Now the point here is you have to inhale through your mouth using your stomach. Means to speak in vernacular language, Hindi. बेंबीतून जोर आला पाहिजे. From the Your diaphragm should basically move. Hindi. फेफड़े के नीचे एक पर्दा होता है जो छाती और पेट के बीच में आती है. उस मसल का एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा आपको ऑक्सीजन या हवा मिलती है. लंग कैपेसिटी बेसिकली. वही लंग कैपेसिटी. फेफड़ा जब नीचे जाएगा और फेफड़ा जब अंदर जाएगा तो लंग फूलता है. मैक्सिमम फेफड़ा जब ऊपर जाते हैं, डायफ्राम जब ऊपर पुश करता है तो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है. ओके. When you exhale, डायफ्राम ऊपर जाता है. When you inhale, डायफ्राम नीचे जाता है. यहाँ पे आता है रफली डायफ्राम at your 33 rib. It's something like this. It should become flat down like this and then like this. The movement is like this basically. जो आपका ब्रीदिंग के पेट जो हिलता है, वो पेट नहीं, वो डायफ्राम हिलता रहता है. So basically the exercise is like this. You have to pull all the 3 balls at the top. This is just a first step. I'll show you. Now actually my force is such that I am easily able to make 2 balls at the same time. You try once. This is by suction, right? Yeah. We Creating have to- vacuum inside We have to Suck. pull the air inside. ओके. from inside. मतलब हवा के खींचने से वो बॉल ऊपर आने चाहिए. हाँ. ओह वाओ. See, अभी ये वापस तीनों एक साथ कर रहे हैं. अगर आपका लंग अफेक्टेड है, कंसल्ट विथ योर डॉक्टर. बाद में करना, बट फर्स्ट स्टेप इज ये है एक बॉल. अभी मैंने बहुत कम जोर लगाया. अभी ये हो गया 2 बॉल. अभी ये हो गए 3 बॉल. अभी अगर आप देखेंगे तो ये डिसमेंटल होता है. जो बॉल जिस पीएसआई पे है उसी पीएसआई पे रखो, चेंज मत करो. आई विल शो यू व्हाट हैपेंस. अभी ये अगर आप देखो कि ये छोटा बॉल है, थोड़ा हैवी है, वेट ऐसा हाथ में नहीं समझ में आता, बट व्हाइल पुलिंग यू विल कम टू नो. अभी ये जो छोटा बॉल है मैं डाल रहा हूँ 600 पीएसआई. ये जो सबसे हल्का बॉल है मैं डाल रहा हूँ लास्ट में. ये मिडिल का मिडिल में रख रहा हूँ. वापस बंद कर देते हैं. Now basically अगर आपने देखा होगा, if you have seen, this ball goes first, but now see the effect. The thing is यहाँ पे जोर ज्यादा लगता है because आप 1200 तो खींच ही रहे हो, लेकिन ये 600 पे भी ऊपर नहीं आएगा. ये 1200 पे ऊपर आएगा तो आपका रफली 1800 से 2400 का प्रेशर जाता है. बिकॉज इसका पहला 600 तो इसको लगेगा,
इसका 900 तो वैसे ही लग रहा है और इसका 1200, ये 1200 में तो ऊपर आ ही जाएगा, बट इसको एडिशनल प्रेशर लगेगा, ये आपको लंग को प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए, करेक्ट? जो बॉल जहाँ पे है उसी को रखो, what the hospital or the pharmacy has provided you. And the way they have told you to do it that way. Consult your doctor. Because according to your conditions, they have prescribed the way and how many number of time repetitions you should do regarding that exercise. हिंदी मराठी आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके देह स्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुसार डॉक्टर ने बताया रहता है आपको कि एक्सरसाइज कितनी बार करना है, कैसे करना है, तो उतना ही वैसे ही करो। अपने मन से कुछ हिरोइक्स करने मत जाओ। आपल्या मनाने काहीतरी मोठा पराक्रम करायचा म्हणून मोठेपणा दाखवायला जाऊन वाटेल ते करायला जाऊ नका। तुमच्या डॉक्टरांनी तुमच्या परिस्थितीनुसार, तुमच्या देह शरीरानुसार तुम्हाला काय एक्सरसाइज करायला सांगितलंय आणि किती वेळा करायला सांगितलंय, केव्हा करायला सांगितलंय, तेवढंच करा। एंड बेसिकली बेसिकली क्या है कि द पॉइंट इज दैट इवन आई एम नॉट एबल टू डू इट मोर देन 20 टाइम्स एट वन सिटिंग। हार्ट पे काफी लोड आ जाता है एंड यू बिकम ब्रेथलेस एज वेल। ठीक है, अभी इसका एक और जो मैं खुद करता हूँ इस एट ईच सक्शन मैं 8 सेकेंड पकड़ता हूँ, काउंट में। ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स। ये अगर आप हर सक्शन पे 10 सेकेंड अगर आप करते हो, लाइक डू अ सक्शन, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, उसके बाद आधे मिनट का रेस्ट लो, अगेन डू अ सक्शन। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी लंग कैपेसिटी और भी अच्छी होगी। नाउ द फाइनल पॉइंट इज, ये कोविड के मरीज भी कर सकते हैं जो ऑक्सीजन पे। अभी मेरे पिताजी अगर आप देखेंगे, ही इज ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बट इवन ही कैन डू इट 5 टाइम्स। This is oxygen concentrator guys, this is not a cylinder. इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं आपको लिंक आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का डिफरेंस क्या होता है। ये हटा दो। मल्टीलिंगुअल वीडियो। आप पाइप आएगा आपको, वो उससे ज्यादा कर सकते हैं, मगर वो ज्यादा बीमार थे, इसके लिए हम लोग मना करते हैं उनको कि ज्यादा जोर मत कीजिए। बस 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 बस। सो ओके गाइज, अगर हम लोग के एंड से इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है, इफ देयर इज एनीथिंग वी हैव मिस्ड और वी हैव टोल्ड इनकरेक्टली, तो ऐसे बताना, कमेंट में डालना। सेकेंडली, विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर आप लोग मत करना। एंड ये लाइक लोकल ई कॉमर्स साइट्स पे या फार्मेसी पे मिल जाएगा। ये वाला जो मेरे को हॉस्पिटल ने दिया था, ये चिरोन साइजर है। आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर या फिर इसका फोटो दिखा के उनको बोल दो कि ऐसा चाहिए, but consult your doctor before buying, even if you are healthy. The link of the video, not complete video. If it is not possible, then please share the link of the video, and please also comment in the comment section that which part was incorrect or not completely given information about, so we can improvise if possible on next time. And one more thing I would like to tell you is, I will give the link in the description box as I mentioned in the comment, as I mentioned in the video somewhere, because we were showing you the oxygen concentrator. I'll give the link in the I section or in the description box of oxygen cylinder versus the oxygen concentrator, the difference. Thank you guys. Bye. Take care. Stay safe. Stay healthy.